So I'm going to divide this speech into 3 parts. पहले I'll give you a small introduction about myself. फिर उसके बाद how I started my journey as an investor, as a stock market trader and as a fund manager. उसके बाद what you can do when it comes to entrepreneurship, how you can start your journey even if you don't know what you're doing. मतलब अगर आपको प्रोडक्ट भी नहीं है, अगर आपको पता भी नहीं है, तो भी आपको क्या करना है, I'll talk about that. Because in today's world, entrepreneurship is a hype. It is at some point. But personal branding is a thing. I mean, you have to show yourself out there. So how many of you guys use LinkedIn? Come on, raise up your hands. And how many of you guys post on LinkedIn? Okay, that's a good number, by the way. So yeah, that is what. So I'll just give you a brief introduction. So hi, I'm Amar Khanna. I'm into stock market since last 8 years now. And I have trained 4,000 plus students. I am managing funds of 78 HNIs and ultra HNIs and family offices. So I am currently working out with many people. I am working with startups. So basically I help startups to get the funding by the investors. And I get, basically मैं उनका एक platform बना के I help them. And I have worked with a lot of companies, brokerage companies. You must be knowing Angel One. You must be knowing Angel One. Amazing. So I have worked with them. I have worked with Dhan. I have worked with IIFL Securities. I have worked with Asset Plus and many other companies in collaboration. Right? How it all started? It started back in 2014 when I was in Kota. I was about to, actually I was studying for IIT. So how many of you guys were in Kota preparations? यार तो बहुत कम लोग हैं, but चलो ठीक है. So I was one of them. I started preparations in 2014. I was there for 2 years. And every morning, breakfast वहाँ पे पोहे और कचौरी बहुत famous है, if you know, right? तो वहाँ पे सामने एक टीवी हुआ करता था. And उस टीवी पे markets के बारे में बहुत बातें होती थी. I mean, red, green. This company is doing something, that company is doing something. And I had that in my mind कि मुझे ये सब करना है. I want to do that. But obviously, छोटा था मैं तो मैंने ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया. I went back to studies and everything. But fast forward in 2016, when I was in engineering college in Mumbai, I had this idea that let's talk about the markets, let's try to learn the markets. But again, कैसे करना है वो समझ में नहीं आ रहा था. So me and my friend were talking. Is my voice audible? Energy दिखाओ थोड़ी. Amazing. Yeah. So me and my friends were talking and he asked me to start reading books about trading. And that is how it started. क्योंकि उसने एक Instagram पे basically post पढ़ा था कि Bill Gates 52 books read करते हैं yearly. किसने किसने ये post देखा है? किसने देखा है ये post? बहुत viral हुआ है ये post कि he reads 52 books, basically 1 book a week. So I took that seriously. And within 6 months, I had a book collection of 25 books. And I started reading about basically non-fictional books, right? How to do the business, what is mindset and everything. And trust me on this one, reading is one of the best things you can do. How many of you guys read books? How many of you guys read non-fictional books? Right? So non-fictional पढ़ा करो यार. Right? One of the best books that I learned a lot from is Rich Dad Poor Dad, Robert Kiyosaki. You know the book? Amazing. So वो book, it changed my perspective towards life and towards stock market. And उसके बाद I actually started renting out the books in colleges. तो मैं रेंट करना बुक 25 बुक्स थे यार, मैंने सारे पढ़ लिए थे. What should I do? उसके बाद मैंने रेंट करना स्टार्ट कर दिए बुक्स को. And I started learning about stock markets as well. It took 5 years just to be a successful trader and investor into the markets. As of now, trader. And वो 1.5 साल में इतने ups and downs हुए because I lost a lot of money. But again, I was a student. I was in engineering college. And finally, I did learn about the stock markets and everything. And I started my own office in 3rd year of my engineering college in Mumbai. So I started teaching people for free. मैंने अपने जो college के friends थे उनको free में सिखाना शुरू कर दिया. And after a while, basically I started posting it on social media. और वहाँ से traction आया, so I was fully into that. So that is how I trained and I mentored 4,000 plus students as of now. But ये सब तो ठीक है. उसमें करना क्या है? Right? What exactly you should do? So how many of you guys want to start your own business?
ठीक है. हाउ मेनी ऑफ यू गाइज want to do something as a freelancer? Established business नहीं है, but freelancing कुछ service provide करनी है side by side while working with a job, right? So I'll share the 3 tips with you जिससे आप ये सब कर सकते हो. As I asked, how many of you guys use LinkedIn? All of you guys use LinkedIn, but you do not post on LinkedIn. So what you can do is you can start posting content. If you talk about content, आज की डेट में social media is basically a marketing platform. Use it that way. Don't consume, create. Create करना start करो. अब आप मुझसे पूछोगे कि यार क्या create करूं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है ना? Start creating whatever you feel like. For example, अब ये event हो रहा है. What you can do is you can click a picture of this event and you can post it on LinkedIn. You can write your lessons and everything, right? और ऐसे ही आपको रोज एक पोस्ट डालना है लिंक्डइन पे. नाउ व्हाट विल हैपन इज, जॉब के पर्सपेक्टिव से भी, एंटरप्रेन्योरशिप के पर्सपेक्टिव से भी, इट विल हेल्प यू. बिकॉज सी, ट्रस्ट मी ऑन दिस वन, समवन हु इज हेल्पिंग स्टार्टअप्स फॉर फंडिंग, सबसे पहले मैं उनका लिंक्डइन चेक करता हूँ, सोशल मीडिया चेक करता हूँ. एंड एज अ जॉब रिक्रूटर मैं सबसे पहले लिंक्डइन ही चेक करता हूँ. यू गाइज कैन एग्री विथ मी ऑन दिस वन. आजकल रेज्यूमे ज्यादा कोई नहीं देखता है. एवरीवन गोज ऑनलाइन एंड दे चेक अबाउट योर लिंक्डइन. सो इमेजिन दैट कि कोई एक प्रोफाइल है जिसका लिंक्डइन पे ज्यादा एक्टिव नहीं है, एंड ऑन द अदर साइड यू आर देयर एंड यू आर वेरी मच एक्टिव ऑन लिंक्डइन. तो मैं किसको चूज करूंगा? ऑब्वियसली यू गाइज, बिकॉज यू कीप पोस्टिंग. सो दैट्स द फर्स्ट लेसन यू शुड लर्न एज एन एंटरप्रेन्योर. आज के टाइम में सोशल मीडिया इज एवरीथिंग. लिंक्डइन इज द की. नो मैटर इफ यू आर इनटू एंटरप्रेन्योरशिप, नो मैटर इफ यू आर इनटू जॉब्स एंड एवरीथिंग. Secondly, how many of you think that AI will replace your job? Raise your hands. You guys are worried about AI? That's good, you are not worried about AI, right? Because AI cannot replace humans. ये तो हमने सुना है, but it is actually replacing humans. कोई basic level पे, right? So person using AI can easily replace you if you are not into AI. So AI is basically 2000s का programming और coding. उस टाइम कोडिंग के बिना कुछ नहीं था, अब एआई के बिना कुछ. सो लेवरेज करो एआई का, फॉलो योर पैशन, स्टार्ट पोस्टिंग. इफ यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, स्टार्ट पोस्टिंग रैंडम स्टफ अबाउट योर कॉलेज, बट कीप ऑन पोस्टिंग. धीरे धीरे आपको आइडिया आ जाएगा व्हाट यू आर डूइंग. हाउ मेनी ऑफ यू डोंट नो कि उनका पैशन क्या है या उनको क्या करना है? रेज योर हैंड्स. सबको पता है क्या करना है, विच इज गुड. सो इफ यू ऑलरेडी नो कि आपको क्या करना है, यू शुड बी अप देयर. Because trust me on this one, बहुत सारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज मैंने देखे हैं जो बहुत अच्छे हैं इन दिस कंट्री, बट बिकॉज दे आर नॉट रीचिंग टू राइट पीपल, वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं. और राइट पीपल को रीच आउट करने के लिए यू हैव टू बी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया. सो आई एम सेइंग इट अगेन एंड अगेन कि एक्सपेरिमेंट करो जितना आप कर सकते हो, जितना ट्राई कर सकते हो उतना ट्राई करो. इट्स नॉट अबाउट लाइक्स, इट्स नॉट अबाउट व्यूज, इट्स नॉट अबाउट ट्रैक्शन. डोंट ट्राई टू डू स्टफ फॉर लाइक्स, डू इट फॉर योरसेल्फ. बिकॉज कोई भी फील्ड में आगे आप जाओगे, दे विल चेक योर सोशल मीडिया. ऑलराइट, सो कंक्लूजन इज start reading as much as you can. Start reading newspapers, news. Don't just stuck into this college wala life, because you have time in your favor. Trust me on this one, because I started my journey in college itself. बहुत ज़्यादा boost मिलता है. If you do the same thing and if you keep posting on social media, you'll see the difference between जो late start कर रहे हैं और जो जल्दी start कर चुके हैं. So experiment करते रहो and do it as much as you can. Thank you so much.